students from the four corners of heaven, with the vibes of liberty and freedom, with a strong determination to bring about the change. We stand here to celebrate the 73rd Republic Day. A very warm welcome to all. I, Rutuja Bhople, wish you a very happy Republic Day. Republic Day is a celebration of unity and it urges everyone to spread the harmony all over the country. No caste, no creed, rather it is a joy of humanity. The celebration of Republic Day is going to be a bit of different from the past due to the pandemic. Let us leave 2021 behind and strive to take India to new heights in 2022. Before we begin, let me enlighten the significance of the day. This day is celebrated on January 26 every year to give honor to the longest constitution of the largest democracy in the world. Let us venerate Dr. Bhimrao Ambedkar, who is the father of Indian Constitution, on this special occasion. This occasion marks the patriotic spirit within us and encourages us to be loyal and respectful towards our nation. Moving further, let us begin our day by our flag ceremony. I would like to request our Honorable Vice Principal, Reverend Sister Gina, to host the national flag, a symbol of national pride. I request all of you to stand up and show our respect and veneration towards our United Nation, India, by singing the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। With the waving national flag, the atmosphere is filled with patriotic zeal. The fluttering tricolor inspires us to dedicate our lives to our nation. The three color on our national flag, saffron, white and green, symbolizes sacrifice of the millions who died fighting for it, peace and prosperity that prevails in our nation. The preamble to the Constitution of India presents the principle of the Constitution and indicates the source of its authority. It was adopted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly and came into effect on 26 January 1950, celebrated as the Republic Day in India. So, for the reading of preamble, I call Anvi Shrilankar, class 7th B. The people of India, having solemnly resolved to constitute the India into sovereign, socialist, secular and democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, equality of status and of opportunity, and to promote them among all. Fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of our nation in our Constitution Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. Thank you. Thank you, Anvi. I am profoundly delighted to take this opportunity to introduce the guest for the day,
They are none other than our respected sisters. Sister, you have motivated us all enough by being an example of light in the darkness. We would delighted with your expertise and knowledge in every way possible. I heartily welcome our school principal, Reverend Sister Nimmi, manager of our school, Reverend Sister Jessie, vice principal of our school, Reverend Sister Gina, respected Reverend Sister Johnsy. Patriotic song basically foster is the sense of belongingness to a nation. Now let's listen a melodious patriotic song from 9B class girls choir. अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी यान सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका हो वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू Dear friends, respect for the country's flag, a desire to see served, and a deep abiding love of your country are all patriotic impression to impress one of the above impression through speech. So, Kshitij from class 5D share his views with us. Good morning to everyone, and I wish you a very happy Republic Day. As you all know, today we are celebrating the auspicious day of Republic Day, which is also known as Gantantra Divas. On this day, in 1950, our full constitution came into effect. However, it was adopted on 26th of November 1949 under the chairmanship of our beloved Dr. Bhimrao Ambedkar. As we all know him as father of Indian Constitution, he is one of the greatest leader of our modern India at that time. In every schools, colleges and in government offices, we celebrate this day with zeal and enthusiasm. During this pandemic, students perform several cultural activities and sing patriotic songs to remember our freedom fighters and their sacrifice virtually.
At the end, I would like to salute the frontline warriors who have given their life while fulfilling their duty during this COVID-19 pandemic. Corona warriors are the perfect example for the world to face the challenges of the day. Before I conclude my speech, I would like to say patriotism is just like charity. It must begin at home. Thank you. Jai Hind and Vande Mataram. Thank you, Kshitij, for sharing your views with us. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of Government of India to celebrate 75 years of progressive India and glorious history of its people, culture, and achievements. To commemorate this, a series of events, activities like poster making quiz, group discussion are planned and executed in our school to bring into the freedom to knowledge of the freedom struggle. Our nation's way of life and ethnicity is something we identify throughout our lives. In order to exhibit, our youngsters are representing the Indian artistic expression through their dance performance. So, get ready to feel for a spectacular whirlwind and joy and excitement. देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने The coronavirus pandemic has upended life for nearly everyone. Doctors, nurses, policemen, teachers, grocery store employees, drivers. There are so many people who are on the front line of the COVID-19 outbreak, face more risks than most. They all continue to help keep our community safe and the world running. They tirelessly and bravely continue to render their service. It is also a responsibility to united support of our frontline workers by following all the protocols to fight against COVID-19 virus. I, Shravani Saire, on behalf of all our Gianellian family, would like to thank all the frontline workers for their countless sacrifice and service. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मुकेश जियालाल श्री भाद्रे है। मैं इंडियन आर्मी का एक सोल्जर हूँ और मैं लेह लद्दाख में कार्यरत हूँ।
आप सभी ने कोरोना महामारी के विषय में सुना भी है और इस महामारी को महसूस भी किया है और इसके दुष्परिणाम भी हम भारतीयों ने और पूरे विश्व में देखे गए हैं। इस महामारी के समय सभी लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा दोस्तों। आर्थिक, मानसिक और व्यक्तिगत तनाव का सामना करना पड़ा। इसलिए इस महामारी ने अपनों को अपनों से दूर किया है दोस्तों। इसलिए पूरे देशवासियों से मेरा ये अनुरोध है कि आप मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन करें और दोनों वैक्सीन लेना जो अनिवार्य है दोस्तों। जय हिंद। मैं किरण चौहान, एक कोविड वॉरियर इन लाइफलाइन हॉस्पिटल कामठी। दोस्तों, कोविड का सामना सभी को करना पड़ा, पर किसी को अपने नजरअंदाजियों से तो कभी किसी को अपने मजबूरी से करना पड़ा। हर किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ते गए और मजबूरी हमारी थी कि हम ना चाहते हुए भी कोविड में जाके बीच में काम करना पड़ा। हजारों लोगों का जीवन दान दिया है और हजारों लोगों को हमने मरते हुए भी देखा है। तो दोस्तों, इसे मजाक ना समझें, सीरियसली लें, सैनिटाइजर का यूज करें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें और मास्क का यूज करें। इस दरम्यान मैं जैनेली स्कूल का भी शुक्रिया करना चाहूँगी कि वहाँ के टीचर स्टाफ ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मेरा बेटा है मयंक चौहान, जो 8th क्लास में स्टडी कर रहा है। उसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। मेरे ड्यूटी के दरम्यान मैं घर पे ध्यान ना दे पाई, उसके पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दे पाई, तो उसके स्कूल के पूरे स्टाफ ने उसे जब जब भी ज़रूरत पड़े उसके प्रॉब्लम का हर सोल्यूशन दिया है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुए कोविड में। किसी को खाने पीने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है, तो कभी किसी को पैसों से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा आपसे एक विनती करूँगी कि आप ध्यान दें इस बात पर। कोविड के इस दौरान में आप मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, ज़रूरत पड़ने पर जब कर सकते हो तब आप हैंड वॉश करें और बचे रहे, सुरक्षित रहे, घर पर रहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र सीताराम राउत। मैं एनपीसी पद पर ओल्ड कामठी पुलिस स्टेशन नागपुर शहर यहाँ कार्यरत हूँ। मेरा लड़का हर्षेश धर्मेंद्र राउत यह सेंट जेनेली कॉन्वेंट स्कूल कामठी यहाँ 3rd A में पढ़ता है। बीते 2 साल में कोरोना संक्रमण से हमारा समाज और हमारा देश जिस तरह से प्रभावित हुआ और जिन जिन मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ा, उन सब बातों से हम सभी वाकिफ़ हैं। उसी बीमारी ने फिर से हमारे देश में और हमारे समाज में एक बार फिर से प्रवेश किया है और वह फिर से हमें प्रभावित करने जा रही है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से और सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन करें, प्रॉपरली मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। खुद का ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला कलंत्री, स्त्री रोग व प्रसूति शास्त्र तज्ञ, इस स्कूल की 10वीं की छात्रा पूनम कलंत्री की माँ हूँ। कोविड वायरस कोरोना का संक्रमण का समय डॉक्टर्स के लिए बेहद कठिन समय था। एक तरफ तेजी से फैलने वाले कोरोना संक्रमण से पेशेंट सीरियस हो रहे थे, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, जरूरी इंजेक्शन्स की कमी हो रही थी, तो दूसरी तरफ ओपीडी में अनियंत्रित होने वाली पेशेंट की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत परेशानी का विषय बन गया था। डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना योद्धा बोला गया। डॉक्टर्स को खुद की ही सुरक्षा करके पेशेंट का सही समय पे सही इलाज करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में कई डॉक्टर्स ने, अपने देश के डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है। अभी जब ओमिक्रॉन तीसरी लहर कोरोना का संक्रमण का खतरा जब देश पे मंडरा रहा है, तब सभी जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, भीड़ पर नियंत्रण रखना, मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, भीड़ पर नियंत्रण रखें,
स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। Good morning, everyone, and I wish you all a very happy Republic Day. I am Shakuntala Kashyap and a teacher by profession. I am privileged to have this opportunity to share my thoughts and challenges faced during this pandemic as a teacher. I will try to summarize my experiences of teaching online courses. From the moment our schools closed in March 2020, we spent our countless hours attending webinars and workshops to learn how to use various educational technologies, to find the ways to enforce academic integrity, to appropriately structure our online courses. There are no adjectives I can use to describe to you how awful, how painful, how unnatural this distance learning is for me, as much as I assume it is for you. Being at home, teaching online made it more difficult to manage my schoolwork and my personal life, which brought a lot of stress and anxiety. I want you to know that despite everything that is happening, we teachers are working non stop to make quality education. Apart from this, dear students, I trust you that you are taking care of yourself and helping your family in this crisis time. I request you all to follow all the health protocols given by the government. Stay safe, stay healthy. Thank you. नमस्ते, मैं नितेश राम बाबू किशरवानी। मेरा कांद्री कनान में नितेश किराना स्टोर नाम की दुकान है। कोरोना महामारी ने सारी दुनिया को ग्रस्त करके रखा था, लेकिन हमने भी ठान के रखा था कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। हमने सरकार की पूरे नियमों का पालन किया, अपने सहायक कर्मचारियों के साथ में मास्क पहना, सैनिटाइज किया, हर वक्त हर कस्टमर को दूरियां बना के रखा। काफ़ी मित्रों ने हमसे जो गरीब लोगों को किट बना के दान किया, उसमें हमने सहयोग किया। हमारे काफ़ी मित्र थे ऐसे जो बैंक में जॉब करते हैं, स्कूल में जॉब करते हैं, उन्होंने हमसे किट बनवाया, जिसमें आटा, चावल, दाल इत्यादि सामान, खाने की चीज़ें एक थैले में भर भर के हमने लोगों को पहुंचाया। हमारे पास जो सामान लेने आता था कस्टमर, उससे हमने बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार किया। ऐसी कोई बात महसूस नहीं होने दी कि जो कोरोना में हम किसी को अनाप शनाप पैसा लेके दिया गया। हालांकि दिक्कत बहुत थी, समय कम था, सरकार ने हमको नियमित समय दिया हुआ था। कुछ समय तो ऐसा था कि मॉर्निंग 9 बजे दुकान खोलना पड़ता था और 11 बजे बंद करना पड़ता था। सामान आने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ट्रांसपोर्ट बंद थी, अपने वाहन से लाना पड़ता था। उसमें भी कई जगह पुलिस की चेकिंग होती थी। हर चौराहे पे हर चीज़ सामान खोल खोल के पुलिस वाले को दिखाना पड़ता था, लेकिन हमें डर नहीं था, हिम्मत थी हमारे में। हम अच्छी चीज़ कर रहे थे, अच्छा सामान बेच रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी को कोई हमारे से तकलीफ़ ना हो। और सरकार ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, जो कि हमको उन्होंने हमारा सामान देख के, हमें हमारा लाइसेंस देख के हमको माल लाने में थोड़ी सी सावधानी बरतने को कहा और लाने के लिए इजाज़त भी दी गई, जिसके लिए भी मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया मानूंगा और आशा करूंगा कि दोबारा ऐसी महामारी कभी ना आए, इससे हमारा देश, हमारा समाज, हम खुद भी पिछड़ जाए। Now I request our respected Vice Principal, Reverend Sister Gina, to share her views and give us message on this auspicious. Good morning, dear teachers and my dear students. Today we are here to celebrate 73rd Republic Day of our nation. This is a great and auspicious occasion for all of us. We should greet each other and pray to God for the development and prosperity of our nation. In India, Republic Day is not less than a festival. The whole country, regardless of caste, creed, religion, beams with joy and happiness. The entire
country is laced in tricolors to convey that India is a nation where unity in diversity is celebrated. Republic Day, praised each year on 26th January, has gained special significance throughout India's entire existence. Consistently, the national occasion is commended with lots of joy and bliss to make the occasion beautiful and memorable. It was on 26th January 1950 the Constitution of India came into impact, and the day is celebrated as National Day to recognize and celebrate the occasion. We all are aware that India got its independence on August 15th, 1947. Yet, the country didn't have its very own constitution. Rather, it was represented under the laws executed by the British rule. However, after many consultations and amendments, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar presented a draft of the Indian Constitution, which was adjusted on 26 November 1949 and officially came into effect on 26 January 1950. India is a democratic country where public is authorized to elect its leaders to lead the country. Thus, in the Republic of India, every citizen enjoys equal rights irrespective of genders and status he or she belongs to. This day reminds us of the worth of all our freedom fighters, their sacrifices towards the country's freedom, and their devotion towards the country. They did this so that the future generations may live freely without any struggle and take the country forward towards the road of development and progress. Today, we all should remember and pay the due respect and homage to them. Since we got independence from the British rule in 1947, our country has developed a lot and counted among the powerful countries. Together with some developments, some drawbacks have also arisen, such inequality, poverty, unemployment, corruption, illiteracy, etc. We need to take a pledge today for solving such problems in the society to make our country the best country of the world. Thank you. Thank you, sister, for sharing your precious thought with us. It was really heart-touching. A nation culture resides in the heart and in the soul of people. Let us remember the given heritage of our country and feel proud to be part of India. Dance is an art, an expression that cannot be said, can be expressed. So here is a dance performance by the students who will express their love for the nation through the medium of dance. मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू
indeed an amazing and this performance. Thank you, dear friend. At least I would like to say, let not pass the Republic Day as any other holiday. Instead, look within and think whether we are fulfilling our fundamental duties or not. As you all remember, those who fought for our freedom, let us pray for prosperity and unity of our country on this Republic Day. Now I would like to call Zoya from Class 8B for vote of thanks. Good morning, everyone. Honorable Principal, Reverend Sister Nimmi, School Manager, Reverend Sister Jessie, our beloved Vice Principal, Reverend Sister Gina, respected teachers, and my dear friends, I am Zoya Zubin from Class 8B. I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of St. Gianelli Convent School on the occasion of Republic Day celebration. We all are grateful to the Constitution that came into the efforts on this day. I would like to thank our principal for taking initiative to plan to arrange this wonderful celebration. You are our inspiration and idol. Further, I would like to thank all teaching and non-teaching staff for taking efforts for this successful organization of our school Republic Day celebration. Finally, I would like to thank all known and unknown hands that are contributed for the success of this program. Thank you all and have a nice day of Republic Day celebration.